So in the last class, we discussed about how this integrated farming system evolved from the conventional farming system to mixed farming, diversified farming, and now integrated farming. The concept of integrated farming, why this was evolved, mainly to protect the environment. The specialized farming or diversified farming, mixed farming, so they all involves intensive farming system. Okay. So the main purpose of integrated farming is to utilize the land in a more efficient way and to protect the environment by recycling the waste of one farming system to the other farming system. Okay. And this is more precious when land is less and surplus water is there. This will become more important. That's why I was telling in the last class, this is more popular in the hilly regions, foothill regions, or wherever water streams or water bodies are there. So this is more popular. And to some extent, we discussed about the possibility of integration, because integration word is very, very precious word here. Okay. So again, I'll be giving few examples with that you'll come to know what exactly called as the integration. Okay. So when you want to make integration of different components, so either it involves spatial, temporal, or organization level. So there are three possibilities of integration, which we'll be discussing again. We also discussed some of the drives. Okay. So like economic drives, environmental drives, social drives, which will motivate the people or the owner or the public, whoever it may be for that matter, wants to start the integrated farming system. One of these should be the motivation. Then only there is a possibility of adopting this integrated farming system. Okay. This is all about the previous class. But in this class, I would be touching upon integration of various components of farming system. Livestock fish integration means fish as an aquatic system. Okay. मैंने शुरुआत में बता दिया, जैसे एग्रीकल्चर फार्मिंग सिस्टम इज वन कंपोनेंट, विद इन दैट अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटीग्रेशन. उसी तरह से लाइवस्टॉक के अंदर भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, एक्वेटिक में भी फार्मिंग है. सो नाउ वी आर integrating again one farming system to another farming system. So if we talk about livestock fish, it is the integration of aquatic system and livestock system. If you say agriculture based livestock farming system is livestock के साथ आप agriculture farming का component involve करेंगे. So as per the syllabus, it is mentioned that components in the integrated farming system. So now ब्रॉडली अगर आप लेंगे एक एक सिस्टम बेस, सपोज इफ यू टेक एग्रीकल्चर, दैट इटसेल्फ इज ए वन फार्मिंग सिस्टम. मशरूम कल्टीवेशन इज ए वन टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम. शीप रेयरिंग इज ए वन टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम. तो दोस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को हाउ डू यू मेक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन so that it will become economical, viable, and sustainable. Okay, that is the ultimate goal of integrated farming system. That's why no single integrated farming system is considered to be as the best. It all depends upon where you are advising and where you are implementing. Simply based on the theoretical knowledge, we cannot make any decision to state that this is the best integrated farming system. Okay. So now if you see this one diagram, so these are each boxes, okay, rectangular boxes. They are individual units, and you can make any number of permutation combination. And this permutation combination, which we call as integration, which involves either spatial, temporal, organization. Simple. कोई ऐसे इसमें confusion होने का जरूरत नहीं है. कितना आपका इंटीग्रेशन इंटेंसिव है. सपोज मान लीजिए एक ही एकड़ लैंड में आपने डेयरी फार्म भी बनाया, उसी के बगल में आपने फिश पॉन्ड भी बनाया. So that is a spatial integration. मतलब एकदम you utilize that space. अगर डेयरी फार्म एक जगह में है और दूसरी जगह में दूसरा एस्टेब्लिशमेंट है, वहां का इनपुट यहाँ यूज होगा, यहाँ का इनपुट वहां होगा, देन ऑर्गेनाइजेशन. So like that, different permutation and combinations we can make the integration so that
it will called as a single system. In the end, we'll get the maximum profit. So this is what we told last year, the last class. It could be integration, temporal, spatial, organization. So this is possible only you make a close association. Just to give an example, you make a group studies. ठीक है, 3 लोग बैठ के इंडिपेंडेंटली आप पढ़ सकते हैं, साथ में बैठ के पढ़ना एक मोटिवेशन हो सकता है. दैट इज नॉट कॉल्ड एज ए इंटीग्रेशन. सो यू आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली based on your capacity, based on your concentration, you are making study. But same combined study, if you make it as a part of discussion, you state that like 9 lessons है, उसमें 3 आप पढ़ेंगे, 3 आप पढ़ेंगे, 3 आप पढ़ेंगे, 3 आप प्रेजेंट भी करेंगे. So any related to issue, so you will be answering. So here win-win situation, that we call it as a integration. ठीक है, जैसे इंटीग्रेटेड डिग्री है, so 2 + 3 5 years होना चाहिए. अगर 4 साल में मिल जाएगा, so that is nothing but an integration. Our best you make that association, that we call it as a integration, which generally takes place or which falls under 3 categories integration. Okay. So now let us take few more examples. ये फोटोग्राफ दिख रहा है आपको, ठीक है ना. इसमें देखिए, in the same given land, instead of going for monocrops, they have put 3 or 4 crops. Here there is no integration. Independently they exist. Only thing is that आप स्पेस यूटिलाइजेशन किया, बट इसी का कोई आउटपुट जो है दूसरा क्रॉप के लिए इनपुट नहीं है. ओनली यूटिलाइजिंग द स्पेस विथ रेस्पेक्ट टू न्यूट्रिएंट्स, विथ रेस्पेक्ट टू सन रेज और विथ रेस्पेक्ट टू एनी टाइप ऑफ पैटर्न. अगर मान लीजिए किसी को डीप सॉइल का रिक्वायरमेंट है, वो एक क्रॉप डालेंगे, और किसी एक क्रॉप को टॉप सॉइल की जरूरत है, वो एक क्रॉप डालेंगे. तो देयर इज नो कॉम्पिटिशन बिटवीन 2 क्रॉप्स, बोथ क्रॉप कम सेपरेटली. व्हाट आई टोल्ड यू, ग्रुप स्टडीज इंडिपेंडेंटली आप करेंगे, बट साथ में रखेंगे. ओनली इट्स ए मोटिवेशन, साथ में बैठने से मोटिवेट, बट देयर इज नो इंटरडिपेंडेंस. ठीक है ना. सो दैट वी डोंट कॉल इट एज इंटीग्रेशन. सो दिस कैन बी मल्टी क्रॉप, मल्टी टायर क्रॉप. यहाँ भी स्पेस यूटिलाइजेशन होगा, बट स्टिल वी डोंट कॉल इट एज इंटीग्रेशन. उसका इनकम, प्रॉफिट, लॉस सब इंडिपेंडेंटली करेंगे, क्योंकि यहाँ इंटरडिपेंडेंट है. उसका रिक्वायरमेंट अलग है, इसका रिक्वायरमेंट ही अलग. बट ऑन द अदर वे, सेम एग्रीकल्चर फॉर्म में यू कैन सी हियर सुपारी, अरेका, अनदर इज बनाना प्लांटेशन. सो इन द बिगिनिंग, अरेका प्लांटेशन रिक्वायर्स shade because these plants are highly prone for the extreme sunlight. But you put banana as a subsidiary, but still there is a win-win situation. That is possibility of integration. Same that areca, when it grows taller, then generally you don't put banana, because once it becomes independent and it becomes resistant for the temperature, then again you can go for the addition of one more crop. So that is बीटल लीफ जो होता है सुपारी के साथ जो खाते हैं, या पेपर जो क्रीपर जैसे काम करता है. उससे क्या होगा, डायरेक्टली स्टेम पोर्शन जो भी सनरेस होगा उसके ऊपर पड़ेगा नहीं. सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ occurrence of cracks on the stem in case of what you can say areca. At the same time, beetle will get a support from the areca so that the yield will be more. Okay, so this is called as a type of integration. So there is a clear-cut differentiation between the integration and multi-tier crop system. Okay. Similarly, if you take livestock as an example, आप एक ही ओनर होने के बाद you can have a dairy farm separately, sheep farm separately, or goat farm separately. दोनों से interdependent नहीं है आप, but दो farm they exist by single owner and they exist side of another farming system, but there is no integration. We don't call it as a integrated farm. But when there is a association, then we call it as integration. So that we can see it here. Cattle fish integration. Here fish pond is one of the primary source. As a end user. Okay. So these are all input sources. So there are 4 or 5 possibilities. Cattle fish integration, pig fish integration, साथ में pig fish duck integration, goat fish integration, poultry fish integration.
ठीक है. The whole crux of this course involves only these 4-5 close associated integration for an ordinary farmer. But still, if you want to go behind this one, then you can include any agriculture or horticulture crop as another important component along with your integration. Okay. So when you take cattle fish integration, so as of now cattle का डंग एंड करने में कोई ऐसे दिक्कत नहीं है. तो इसलिए डंग को फिश पॉन्ड में डालने में कोई ऐसे बड़ा एडवांटेज नहीं है. बट देयर इज अनदर इश्यू. सपोज इफ वी कम टू central part of India, southern part of India, or western part of India, so there is sufficient sunlight over the day. So naturally, whatever the dung you collect, it will get dried. But when you go to the rainy belt area, or jahan most of the times continuously there is a dribbling of rainfall, that dung will not get dried at all. तो उसको हैंडल करने में बहुत दिक्कत होगा. So there is a possibility of leaching of nutrients from the dung. तो उस समय क्या होगा? Better to use it for the fish pond rather than making it a heap and allowing it to compost, then subsequently using as a manure for the agriculture field. So you can make little bit of integration, particularly in the humid region or wet region. Okay. तो उस situation में आपको ये advantage मिल सकता. This is one thing. Second one is, suppose उस area में आपका fish का practically there is a demand. Okay. And if you go with the commercial feeds, what we feed for the cattle, similarly you get commercial feed for the fishes also. If you try to purchase and offer to the fish pond, so probably you may not get the sufficient income. तो उस केस में part of the dung you can use it for the fish pond. वो सिर्फ fish pond के लिए food नहीं रहेगा, साथ साथ में it will help in development of, you can say, a biological mass in the fish pond, which is very much important for the growth of the zooplankton and phytoplankton. Okay, so it's a ecological system. उसमें डंग का तो by default, even आप डेयरी फार्म भी नहीं होंगे तो कुछ डंग वो डालते ही डालते for the development of zooplankton and phytoplankton. साथ साथ में अगर additional advantage अगर आप डेयरी फार्म साथ में ही है, then you will get a dual advantage. Anyhow, so this cow dung generally, a cattle, we can presume that it's an average value. It produces 1,350 kg. It's wet basis, basically 8,000 liters of urine. So when this, if you take cow dung, so if you put it in the fish pond, it will not suddenly settle down. Slowly it goes down. Okay. So during that time taken to settle or to settle in the bottom, so many of the fishes will take the advantage as a feed. Okay. So this could provide a sufficient time to fish to consume some edible portion available in the dung, which includes partially broken, non-digested grains, part of grass, something fiber items, whatever it is, it has come out of the dung. Okay. So that will be eaten by the fish. Okay. About 3 to 4 cows can be sufficient for 1 hectare of pond. This question generally comes, okay, in the external exam. कितना cow एक हेक्टेयर पॉइंट के लिए जरूरत पड़ता है या 1 हेक्टेयर पॉइंट के लिए कितना cow का जरूरत पड़ता है? एक थंब रूल है. दिस इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको 3-4 ही लिखना पड़ेगा. किसी भी किताब में जाएंगे तो आपको 5 cow भी मिलेगा, बट एक आर्बिट्ररी नियर वैल्यू यू शुड नो इट. Next is goat fish integration. You all know that in the hilly region, goat is one of the predominant small ruminant. Compared to sheep, goat is more prevalent. Okay. Although goat का feces जो है highly nutrient, okay, it can be collected and stored very easily. But otherwise, वही fish का जो dung है, fish pond डालने में, so there is a greater advantage. Why? Because you might have observed that solid excrete of goat, okay, so it generally expels in the form of small pellets, which is generally coated with a mucus type of discharge. ठीक है ना, एक coating जैसे आपको मिलेगा. So that will help in slowing the, what you can say, possibility of getting diluted in the water quickly will be reduced. ठीक है ना, उसकी वजह से जनरली टाइम लगता है. दूसरी बात यह है कि इट विल फ्लो. ठीक है. इन एडिशन टू इट्स
NPK value. This is another advantage. ठीक है ना? So that I'll read out. Goat droppings have an advantage of direct application to the fish pond because of size and coated with the mucus which helps in the float. Okay. So this goat farm can be established adjacent to the fish pond, और वो थोड़ा दूर भी होने से you can transport from that existing fish pond to the goat farm to fish pond, क्योंकि pellets होने के कारण उसको जैसे डंग ऑफ काउ का जो ड्रिबलिंग करते हैं, वॉश आउट करते हैं, वॉशिंग्स के साथ जो आ सकता है या पिग में होता है, वो चीज गोट में नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ दैट पेलेट एंड म्यूकस, क्योंकि दैट विल नॉट बिकम सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड विच हैपेंस इन केस ऑफ पिग एंड पिग एंड कैटल. ओके, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा दूर भी रहेगा तब भी आपको ट्रांसपोर्ट करके फिश पॉन्ड में डायरेक्टली डाल सकते हैं. Among all the integration, so this has been worked as an excellent pig fish integration. देखिए काउ में भी हमने एक added advantage बता दिया. क्या है कि when you put the cow dung into the fish pond, so by the time it settles in the bottom, so fish will get a chance to eat the undigested material available in the dung. Goat में क्या बताया, because of that mucus coating, it floats and also allowed some time to dissolve. Okay. Pig में क्या advantage है? You all know it. Whenever you use it to the pig farm, typically you will get that smell. So all of us we call it as a foul smell, but only because of that sulfide content in the feces is more relatively or high compared to other animals. So इसलिए वो foul smelling लगेगा. So इसलिए handling of dung it's very difficult. आप एक जगह में डाल के, unlike other species, you cannot put it as a heap and store it for a long period. एक तो कंपोस्टिंग में भी प्रॉब्लम है उसमें, दूसरा है काफी दिन तक उसको स्टोर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्शन फ्रॉम द सराउंडिंग पीपल और बाय यूअरसेल्फ. ठीक है, सो इसको बेस्ट ये है कि उसको इमीडिएटली एडवांटेज लेना है बाय पुटिंग इनटू द फिश पॉन्ड. एंड इन केस ऑफ फिश पॉन्ड, डंग obtained from the feces or you can say fecal matter of the pig is more, you can say rich with respect to ammonium sulfate. Okay na? So that gives an added advantage. क्या होता है? So when you put it to the fish pond, part of it will be eaten by fish and also it enhances the biological productivity of the pond, which is equally important. Okay. So here the excreta divided by 35 to 40 pigs is sufficient for 1 hectare of fish pond. Okay. इसमें और एक कंपोनेंट आप ऐड कर सकते हैं. So when you divert fish species into the fish pond, the pig species into the fish pond, so it enriches that fish pond to such extent that कभी-कभी वो टर्बिड भी हो जाता है ज्यादा होने के कारण. फिर वो फिश पॉन्ड में इतना ग्रोथ हो जाएगा, फिर दैट विल बिकम अनफिट फॉर द फिश, क्योंकि एक कोटिंग इतना जू प्लांक्टन एंड फाइटोप्लैंक्टन अगर ज्यादा ग्रोथ होगा, सो एरिएशन नहीं होगा वाटर में, विच विल क्रिएट अगेन प्रॉब्लम फॉर द फिश ग्रोथ. ठीक है ना? तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, वी ऐड वन मोर स्पीशीज डक, सो विच विल टेक द एडवांटेज बाय ईटिंग द सम ऑफ द बायोलॉजिकल वीड्स विच आर गोइंग टू बी थ्रेटेंड इन द फ्यूचर. ठीक है ना? वो ज्यादा होने से भी क्या होता है, उसके अंदर जो बीओडी कहते हैं, क्या अवेलेबल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है, तो उसमें थोड़ा सा इम्बैलेंस होने के कारण अगेन फिश विल स्टार्ट डाइंग. फिश पॉन्ड में आपने देखा हो ना, एरेटर डालते हैं. ठीक है, वो चीज यहाँ डक्स करते हैं. सो आई रीड आउट सो विल गेट स्टिल आइडिया. A fish pond being a semi-closed biological system with several aquatic animals and plants provides an excellent disease-free environment for the ducks. And these ducks consume juvenile frogs, tadpoles, dragonfly, thus making a safe environment for the fish. ठीक है, एक तो ये एडवांटेज है. साथ साथ में duck droppings go directly into the pond, which in turn provide essential nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus, which stimulate the growth of natural food organisms. And these ducts not only provide nutrient to fish, but also helps in aerating the pond water, which is equally important because of that bottom raking effect. जिस तरह से वो पैर मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से वो एरिएशन का एडवांटेज मिलता है. So about 300 number of ducks can take care of fertilization for the water bodies of 1 hectare. ठीक है? So this is a pig fish
Another is pig fish duck integration. This has been proved excellent in most of the part of the India. Okay. So last, poultry fish integration is not so popular क्योंकि जैसे डक जैसे पोल्ट्री, so they don't spend time in the fish pond, and also they may not enjoy the wetness in and around that area. Okay? So that's why it's not so popular. However, you can take advantage when you think that to some extent you can utilize for your improvement of the economy. Okay. So here there are two possibilities. Either you can keep the layers or the broilers. Broilers अलग रख के आप उसका डीप लीटर जो है फिश पॉन्ड में यूज कर सकते हैं. अदरवाइज if you maintain the layers, so dropping straight away they drop into the fish pond. Okay. तो इसमें क्या होगा? In addition to the meat, you will also get the eggs. So one adult chicken produces 20-25 kg per year, depending upon type of litter used. Around 500 to 600 birds would be sufficient for 1 hectare of fish pond. Okay. So this is all about the livestock fish integration. ठीक है. फिर क्रॉप के साथ अगर हम इंक्लूड करेंगे, though it's part of the syllabus, but we will not go in detail, just for the sake of knowledge, just I'm trying. So these are the possibilities. आप लाइवस्टॉक के साथ एग्रीकल्चर ऐड कर सकते हैं, हार्टिकल्चर फिश के साथ पोल्ट्री ऐड कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सिल्वीकल्चर कर सकते हैं, सेरिकल्चर के साथ फिश कर सकते हैं. देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटी व्हिच आई हैव शोन ऑलरेडी वन फोटोग्राफ बिगिनिंग. तो आपका मॉडल कोई भी फिक्स नहीं है, बट यू हैव टू वर्क आउट which is best to your area based on the some R&D, research and development करके फिर आपको एज ए मॉडल आप रेकमेंड कर सकते हैं. ये भी मैंने फोटोग्राफ दिखा दिया था. इंटीग्रेटेड राइस फिश पोल्ट्री मॉडल, ये सब वर्कआउट करने के बाद पीपल हैव सजेस्टेड इंटीग्रेटेड राइस फिश वेजिटेबल. यहाँ क्या है? एग्रीकल्चर भी इन एडिशन टू द लाइवस्टॉक एडिशन हो गया एक कंपोनेंट. ठीक है ना. सिमिलरली इंटीग्रेटेड मकाना फिश सिंगाड़ा सिस्टम. सो नाउ इसको कैसे भी आप इंटीग्रेशन करिए, बट यू हैव टू मेक इकोनॉमिक्स. नाउ यू कैन सी दिस डायग्राम. यहाँ के डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया है. सो लेफ्ट साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है आपका, सो डिफरेंट इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन उन्होंने ट्राई किया. राइस व्हीट एक कॉम्बिनेशन ट्राई किया, फिर राइस, फिर sorghum, बरसिम, मेज, उसके साथ साथ डेयरी, फिर उसी साथ साथ पोल्ट्री, उसके साथ साथ फिश. सो लाइक दैट. सो दे वर्कड आउट द इनकम एंड द एंड दे वर्कड आउट द व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर एज ए सिस्टम. इसलिए दैट्स व्हाई दे यूज द वर्ड सिस्टम प्रोडक्टिविटी. पहले इंडिविजुअली लिया है, बाद में उन्होंने सिस्टम प्रोडक्टिविटी कंसिडर करके देन दे विल सी दैट विच IFS मॉड्यूल in that area is going to work. Okay. So in the last class also I told you, so depending upon area you have to work out the different models. Here you see this IFS model in the irrigated agro ecosystem of eastern Uttar Pradesh. Okay. So similarly dry land, which I also shown in the last class. ठीक है. ड्राई लैंड में बनाए इन्होंने irrigated irrigation. Okay. So this is regarding the